Where is Beauty, sir? Morning. Hi, good morning. Good morning, Good ma'am. morning, Biti ji. Morning, Good evening, morning. ma'am. Hey, good morning. Good morning, everyone. Morning. Morning, Good everyone. morning. Hearty Good good morning, Join this big Ajo. party of morning, people. Anu. Morning. Very good morning. Good Good morning. morning, Ritu, everyone. I hope everyone celebrated the day of love and affection, Valentine's Yes, Day, and the day of spring, Basant Panchami. I saw a lot of people wearing yellowish orange color yesterday. So, Yes. and red, and red. सबकी अपनी And अपनी pink. priority होती है ना. So yeah, we continue with our day 0, my discovery, where Rhonda 1 talks about that how her life changed using gratitude. जब उनको पता लगा the depth of gratitude and the depth of the practices that she needed to do. तो उसके बाद उनकी जिंदगी में इतना बड़ा shift आया. मतलब she was actually living from paycheck to paycheck. Her health wasn't good. Her relationships wasn't good. And everything turned around in her life. And today, if we actually see, she is one of the wealthiest persons, healthiest persons, and she has amazing relationships and success ka level hum soch sakte hain because we are also sitting in our rooms right now in our houses and reading her book creation, right? So that is her level of success that she has reached, that unki likhi hui kitabein हम सब पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के एंड वी रियलाइज द वैल्यू, और हमारी जिंदगी उसकी वजह से बदली है, उस किताब की वजह से या उन किताबों की वजह से, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन, वी ऑलरेडी डन पावर एंड हीरो. सो हम उनकी 3 बुक्स पढ़ चुके हैं अभी तक. सो we know her insane level of success that she has accrued in her life. So हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिस्कवरी क्या थी, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया और किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई और क्या उन्होंने प्रैक्टिसेस किया और किस तरह से उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं. ऑटोबायोग्राफीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ना. आई लव रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज. आई लव रीडिंग अबाउट, if Elon Musk has to say something, I love reading about that. I love reading about Warren Buffett. वॉरेन बफे से ये पता लगता है कि क्या उन्होंने क्या स्टेप्स लिए. उनके भी तो बहुत सारे डिवाइन स्टॉर्म्स आए होंगे ना जिंदगी में, but then they've all turned it around for their growth, success, progress. So yeah, let's get reading. So we have Rachna from Bangalore reading for us. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. My discovery. My story is perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, inverted comma open, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. Inverted comma closed. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of my stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear.
But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my day became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yeah, this is about Rhonda Byrne talking about herself, her life. So it is my discovery. So she discovered gratitude. उनको पता लगा कि that this is the biggest secret of life, जो बहुत सालों तक secret ही रही थी. फिर उसको बहुत बाद में किसी ने, emerald tablet को निकाला था, खोद के, it was dug up. And then उसके बाद बहुत सारी books थी. फिर Think and Grow Rich आई थी. उसमें लिखा हुआ था gratitude के बारे में. फिर धीरे धीरे इनको पता लगा. So even Abraham Hicks, जो एस्टर और जेरी हिक्स है, उनकी भी पहली मेंटर वाज दैट थिंक एंड ग्रो रिच, ओके, दैट बुक. एंड इनकी भी, रॉन्डा बर्न की भी वही वाली बुक थी. बट ऑफ कोर्स इसके बाद इन्होंने बहुत डीप डाइव किया इनटू दैट वर्ल्ड, दैट व्हाट इज दैट ग्रैटिट्यूड. इज ग्रैटिट्यूड जस्ट सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और इट इज लिविंग ग्रैटिट्यूड? सो सेइंग थैंक यू एंड लिविंग इन ग्रैटिट्यूड आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज दोनों में डेप्थ और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग होती है. तो उनको पता लगा कि मैं तो बचपन से थैंक यू बोल ही रही थी, सो व्हाट वाज इट, क्या बिग डील थी. मैं जब भी मेरे लिए कोई कोई करता था तो मैं तो हमेशा थैंक यू बोलती थी. बट उनको जब ये डेप्थ से पता लगा दैट फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द स्मॉलेस्ट लिटिल गिफ्ट दैट वी हैव, और फिर रियलाइज हुआ कि पूरी जिंदगी आजू बाजू की सब ग्रैटिट्यूड के कारण ही तो है. इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड समवन एल्स, है ना. हर चीज हमारी, जो हमने कल भी बात किया था कि हर एक चीज हमारी है, जिस सड़क पे हम जाते हैं वो किसी और ने बनाई है, जिस जिम में हम जाते हैं वो किसी और ने बनाया है, इक्विपमेंट किसी और ने बनाया है, हवा जो हम सांस लेके जिंदा है वो भी बाहर से नियामत है, वो भी हमारे लिए गिफ्ट ही है. तो इस तरह से तो सन इज शाइनिंग एवरी डे, कमिंग इक्वली ऑन एवरीवन, बिना बायसनेस के, और उनकी वजह से ही जिंदगी है. तो वो मतलब नेचर ने, यूनिवर्स ने हमको एज अ गिफ्ट दिया है. तो सब कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ ही तो किसी और का है, कहीं और से ही आ रहा है. तो उस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड को जब हम फील करते हैं, एंड देन लिविंग ग्रैटिट्यूड में डिफरेंस होता है ना. लिविंग ग्रैटिट्यूड में से अच्छा है, स्टॉर्म आ रहा है, ये है वो है, आप सब में तभी थैंकफुल रहते हो दैट वाओ, आई मीन दिस देयर इज डेफिनेटली अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ, राइट. सो इस तरह से उन्होंने अपने चारों एरियाज में बताया है कि उनको इतने $1 million का डेट था, मतलब कर्जा चढ़ा हुआ था, वो उनका उतर गया जब उन्होंने थैंक यू बोलना शुरू किया. उसके बाद चीजें होती गई. उनकी हेल्थ, जो उन्होंने लिखा है कि कोई बीमारी नहीं थी जो मुझे छू के नहीं गई हो, लेकिन फिर उसके बाद सब ठीक हो गया जब वो ग्रैटिट्यूड करने लगी अपनी हेल्थ के लिए. पैसा इनके पास बेशुमार आया, मतलब शी इज वन ऑफ द वेल्दीस्ट वुमेन टुडे. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में इनके घर हैं, जो इनको गाड़ियां चाहिए थी, जिस हिसाब से पैसे इनके अभी भी आ रहे हैं. आई थिंक इनकी से सीक्रेट बुक्स है, फॉरगेट अबाउट मैजिक जो हम पढ़ रहे हैं, मैजिक, हीरो, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, और ये जो जितनी भी किताबें हैं, तो इनको छोड़ के सिर्फ सीक्रेट ही अगर देखें ना, उससे भी इनको इतने पैसे आ रहे हैं. यूट्यूब कितना देता है इनको, यूट्यूब पे इनकी किताबें हैं सारी, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग. सो ऑल दैट मनी इज गोइंग टू हर, एंड इनसेन व्यूअरशिप एंड रीडरशिप है इनकी. नेटफ्लिक्स हैज परचेज हर सीक्रेट बुक ऑल्सो. सो इस तरह से इनको लगातार रॉयल्टी इन किताबों की कितनी आती है, बिकॉज लगातार रिप्रिंट हो रही है. So this is the level of success that she's. Every person in the world knows about the book secret. Most of them know about the book secret. जो लोग भी literate हैं और जिनको पता है.
So, I mean, like that is the level of success that she has achieved just by stepping on that stone of gratitude and by living gratitude. है ना? और relationships इनकी अभी तो बहुत अच्छी हैं. So everything she's been able to turn around in her life, that means कि कोई जादुई शक्ति है इस शब्द में, and feel करने में gratitude. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पेशली क्रूशियल टाइम्स में या अभी ऐसे टाइम्स में जब आपका समय नहीं अच्छा चल रहा है या आप मतलब बहुत मन में दुख है, उस टाइम ग्रैटिट्यूड में रहना, अगर वो वाली हमने मेंटल मसल डेवलप कर ली तो उसके बाद लाइफ इज गोइंग टू गिव इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स एंड वी विल लव लिविंग आवर लाइफ. दैट्स व्हाई वी से दैट लाइफ इज टू बी सेलिब्रेटेड, in its own way. Celebration means you are at peace and you're calm. It does not mean a party. Celebration means I'm celebrating life. I have so much joy in my life. I'm at peace. I'm in harmony. I'm calm. I'm living happily. That's what it means. So, and then life becomes like that. And then wo blissfully happy celebration hota hai. That life is blissfully happy, the happiest I had ever been. And gratitude changed me, and my whole life magically changed, which is changing for us also, isn't it? It's changing so much for us. It is so beautiful always. हम जितना sunset admire करते हैं, मतलब दिल्ली में sunsets देखना. So yesterday I was sitting at one place at my friend's office, and rooftop पे बैठ के हमने इतना beautiful, so I was having my chai and samosas which is my favorite. सारे ऐसे खाने पसंद होते हैं ना, छोले भटूरे समोसे. So having my chai and samosa and looking at that sunset, and it was like wow. So those moments I feel a celebration, eating your favorite food and you're looking at the sunset and admiring it, and it literally looking like a big ball of fire, and it's a big niyamat to be in Delhi and to be admiring a beautiful sunset and you see the sun going down the horizon. That's called life is a celebration, right? So that moment I felt that okay, this I'm feeling that celebratory feeling right now. Or even if it is just writing blessings, sitting and writing blessings endlessly, and then I get so lost, that celebration. When I was in the gym working out and I was doing my biceps and triceps, और मेरी हवा टाइट थी उस टाइम बिकॉज इतने सारे सेट्स कराए थे मेरे ट्रेनर ने कल मुझे. So it was like I was feeling that this is celebration. And then I went out for a walk after my gym. That was celebration. Okay, so the life becomes like that. When you're clutterless, there is no noise going in the head, and you know that the best outcome is always happening in my life. That's very, very clear. That's celebration. When you're at peace and when you're meditating or when you're doing ho'oponopono, that's celebration. When you receive expected and unexpected money, that's celebration. And then when you're blessing others all the time, I blessed like, I don't know, 1,000 people yesterday. So that was celebration. So this is what gives results in life. And like unexpected happenings keep happening, and it is like opportunities start coming and hell gets better. This is how it is. So I've recently shared with you my experience of my eyes. I mean, how in a day I could turn around the whole thing. That was the depth of gratitude that I felt that I could do now in one day. Felt, wrote सब कुछ, लिखा भी, बोला भी, सोचा भी, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक भी बार ये नहीं सोचा कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, और फिर एक दिन में सिचुएशन टर्न अराउंड हो गई. That way. So this is what we can do. So there is some jadui shakti in this word gratitude and feeling gratitude, right? So that is what it is. So we go to the next topic. Bring the magic into your life. So Rhonda Byrne ने पहले अपना बताया कि देखो मैंने ये किया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जादुई तरीके से बदल दी. अब आपकी बारी है, आप जादू को अपनी जिंदगी में लेके आओ और आप इसके मैजिकल मिरेकल्स देखो होते हुए कि और जिंदगी में रोल इन दैट फन जॉय एंड लाफ्टर एंड एंजॉय द प्लेजर ऑफ. आई थिंक यूनिवर्स को अगर हम कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं तो हम ये दे सकते हैं कि यूनिवर्स, गॉड, जो भी हम बोलते हैं, वाहे गुरु, आपने हमको जिंदगी दी है, हम इसको भरपूर जिएंगे और ये गिफ्ट हम आपको देंगे कि आपने हमें जिंदगी जिए, हम उस जिंदगी का भरपूर यूज करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सेलिब्रेट करेंगे अपनी जिंदगी, और ये गिफ्ट हम आपको देंगे आपने क्योंकि हमको जिंदगी दी है ना. तो लाइफ भी हमारे लिए नहीं है ना, गॉड हैज क्रिएटेड अस. सो नाउ आवर टर्न टू लिव इन जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड हार्मनी ऑल द टाइम, right? And then we will see the results of that, and that is the return gift we need to give to God back. That is, I think we owe this.
So bring the magic into, yes Rachna, please start Bring reading. the magic into your life. ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ में घर की सारी मंडेन चीजें है ना, सिंक बना हुआ है, टेबल है, एक चाय का पतीला रखा हुआ है, फ्लावर्स है घर में, जैसे बॉटल्स में पानी है, कुछ 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 सारी, और साथ में मतलब जिंदगी की सारी रोजमर्रा की चीजों के बीच में एक ग्रैटिट्यूड का जर्नल रखा हुआ है, किताब रखी हुई है। इसका मतलब है रोज की चीजों में ग्रैटिट्यूड लेके आओ, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। या No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapulted into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do, you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than you were a child. इसमें रॉन्डाबॉन हमको अश्योर कर रही है कि देखो, चुपचाप मुंह बंद करके हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, उससे आपकी जिंदगी जादुई हो जाएगी और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला आई थिंक टॉपिक है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा कलरफुल हाइलाइट्स किए हुए, because when I read I always highlight that portion that's very exciting and that we need to read again and again. और इस वाले टॉपिक में there are maximum number of highlights that I've made, एक इसमें है और एक concluding chapters में। So ये वाला दोबारा से सेंटेंस आया है, no matter who you are, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे आपके कैसे भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, ये ग्रैटिट्यूड का जो जादुई शक्ति होती है ये आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। ठीक है, प्रोवाइडेड हम इसको डिलिजेंटली प्रैक्टिस करें और प्रायोरिटाइज करें। तो इसके बाद रॉन्डाबॉन ने बताया है कि मैंने ऐसे ऐसे वर्स्ट इमेजिनेबल सिचुएशंस देखी हैं लोगों की जिंदगी में, जहां पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके वो 100% ट्रांसफॉर्म हो गए। जो इन्होंने लिखा है कि मैंने हेल्थ में मिरेकल्स देखे हैं जब सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जहां पे कोई होप नहीं था, जो इन्होंने लिखा है ना, आई हैव सीन मिरेकल्स टेक प्लेस इन हेल्थ वेयर देयर सीम टू बी नो होप। ओके, जहां सारे दरवाजे जिंदगी के बंद हो गए हैं, बोल दिया है कि भाई इनकी हेल्थ का अभी कुछ नहीं हो सकता, वहां पूरी हेल्थ दोबारा से ठीक हो गई है। ठीक है, और बेटर देन बिफोर।
सो इतने सारे, इनफैक्ट द secret.tv.stories में अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमको एक्सपीरियंसेस कि क्या क्या उन्होंने प्रैक्टिसेस की और कैसे उनकी जिंदगी बदली है, ये सारे उसमें दिया हुआ है, लोगों के, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस। सो इस तरह से उसके बाद वो बोलती हैं कि मैंने मैरिजेस को सेव होते हुए देखा है, ब्रोकन रिलेशनशिप से अभी वो मैग्निफिसेंट रिलेशनशिप्स हो गए, है ना। एंड ऐसे ऐसे लोग जो टोटल पॉवर्टी में रहते थे, मतलब लिटरली जो बर्गर स्टैंड के ट्रैश बिन से खाना खाने वाले लोग, जो हम लोग ट्रैश में डाल देते हैं अपना बचा हुआ खाना, या कोई हैमबर्गर ट्रैश में डाल दिया, अमेरिका का एक्सपीरियंस था कि आपने वो ट्रैश बिन में डला हुआ खाना खा खा के वो लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। टुडे दे हैव देयर ओन प्राइवेट जेट प्लेन्स, लाइक उस लेवल तक वो पहुंचे। मतलब सफलता भी ऐसे नहीं कि ठीक है सफलता आई सिर्फ सर्वाइविंग, इतना दैट दे हैव देयर ओन प्राइवेट जेट्स टुडे, and eating food from the burger stand के trash bin से। So this is the level of success that people have achieved in their life, सिर्फ gratitude कर करके। ठीक है, कितने setbacks आए होंगे, लेकिन फिर भी they stood tall against that and prioritized gratitude over anything else. Yeah, so that is how life is. So इसमें लिखा हुआ है that सारी मतलब रिलेशनशिप्स जो हैं दे विल बिकम जॉयफुल एंड मीनिंगफुल, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। अभी अभी ऐसा लगता है हमको, इट्स जस्ट दैट ये जो फेज होता है ना बफर टाइम, कभी कभी प्रेयर आंसर तक होने का, जैसे अगर हमने आज से लिखना शुरू किया, कोई भी हमारी जो बर्निंग डिजायर है हमारा, अगर हमने आज से लिखना शुरू किया, हो सकता है उसको रियलाइज होने में 1 साल 2 महीने लग जाए। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो उस बीच खूब रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे कि नहीं हो रहा, अभी भी डिले, मैंने इतना कुछ किया मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इतना कुछ किया मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, मैंने इतनी बार लिखा है, मैंने इतनी बार मैजिक चेक बनाया, मेरा नहीं रियलाइज हुआ, मेरी रिलेशनशिप अभी भी वैसी सुंदर नहीं हुई है। इसका मतलब है ग्रैटिट्यूड अभी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भी कंप्लेन्स हैं जिसके कारण वो खुल के वो चीज नहीं आ रही है। सो अपनी इस चीज को, रोंडा बर्न ने एंड में लिखा था ना कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज आपकी अनफोल्ड नहीं हो रही है, सपोज आपका एक कोई बर्निंग डिजायर है वो नहीं अनफोल्ड हो रहा है, तो आप बाकी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करो। ठीक है, बाकी चीज तो है ना बहुत सारी अच्छी, अगर ग्रैटिट्यूड के का स्टेपिंग स्टोन पे आप आ गए हो तो हर एरिया में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। darker areas especially in our life will start getting illuminated. ओके, बट एक कोई विश पकड़ के बैठे हो कि वो नहीं हो रही है और बाकी जो 100 चीजें हो रही है उसको वो नहीं देख रहे, है ना, दैट मीन्स अभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। जो चीज है जिंदगी में जब तक उसको एडमायर नहीं करेंगे तब तक आगे के रास्ते नहीं खुलते। ठीक है, जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे ना, उस दिन हमारी लाइफ में कोई ग्लिच ही नहीं रह जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज that how things have changed now. How is it that my life has changed because of gratitude, that my relationships have become amazing, my health is so rocking, I'm feeling and looking younger day by day, my body so agile that I can work with 30-40 kgs of weights in the gym now. So all those things, my income is constantly increasing, I have surpassed the level of like bank balance that I needed, that I was praying for, जो मेरी dream list में लिखा हुआ था, I've surpassed that. And of course, like I'm much more happier and at peace now. And I feel so empowered कि कोई भी situation गलत होती है तो मुझे पता है कि उसको turn around कैसे करना है। ये है, फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं गिन सकती हूँ, that I have such an amazing relationship with my office colleagues, and literally my vocation is my vacation. I enjoy so much, I look forward to going to office every day. I feel so good in my, body wise, physically, that I look, I'm much more toned and, like tighter and, so much stamina, so vitality. So all these things when I start, like appreciating, अपने आप इस ये करके ही मेरा वो पर्टिकुलर डिजायर फुलफिल होगा जिसके लिए मेरा बर्निंग डिजायर है। जब तक मैं ये नहीं करूंगी ना कि अभी इस वक्त मेरी लाइफ कितनी इंप्रूव हुई है, क्या क्या हुआ है, तब तक मेरी वो एक विश आंसर नहीं होगी। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट गोइंग ऑन अ सिंगल ट्रैक, एवरीथिंग इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ये मेच्योरिटी का लेवल होता है, जब मेच्योर हो जाते हो, जब आपको पता लगता है कि एक ही चीज के पीछे भागना 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 नहीं, एवरीथिंग इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, like money is important, relationships are very important. You can't spend life with one single person all your life. You need people in your life, so many of them. Every person has their own space and place in your life, isn't it?
So that is how it will. So gratitude से ही हमारे बाकी के दरवाजे खुलते हैं. तो इसीलिए बिजी हो जाओ अभी जोड़ने में कि अभी क्या क्या ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो किन किन चीजों के लिए. और छोटे छोटे celebrate the little wins in life, celebrate the little joys of life. When you start celebrating the little joys in life, then big doors open. Okay, so matlab this is how beautiful life is. And every appreciation that goes from your life, आपकी जिंदगी से कोई भी शुक्राना अगर निकलता है वो कभी भी वेस्ट नहीं हो रहा, वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो रहा है. By the law of attraction, you are going to receive it back into your life in the most unexpected way. Okay, so be excited. जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, every morning when you wake up, be excited about living your day to day and tell the universe, what more I really want to see, what more can I have, what more can I have today, what more can I see today, what more can I give today. Okay, have we had the thought, what more can I give today, what more can I give today? Think about it. How much more can I give today? What is the best version of me? What can be the best version of me today? Okay, that way. How many people can I bless today? Think about that. Think about giving instead of receiving all the time. This is where slightly we are going wrong. We're just praying about receiving, 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 receiving. That means there has been no shift in the heart till now. This is the reason we are doing the magic book again and again. To whomsoever people have spoken to in the past is only about receiving, 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 receiving. Okay? Think about giving, 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 giving. How many people can I bless? Can I bring a smile on someone's face? Can I just do something for my office? And can I do something a little more? Maybe add that extra value in my own way. Okay, universe, tell me, how can I add that extra value to my work today? Can I do that? Can I make my office atmosphere very joyful? How can I do that? How can I do that? Maybe just by smiling and saying good morning to everyone. Okay, how can I make someone, so if I'm talking on phone to someone, I can just end by saying, okay, have a super brilliant day. I can just say that, before hanging up the phone. So that will bring a smile. So think more about how I can give and what I can give instead of how I can receive. Okay, say thank you instead of just asking, can I do this? Can I do that? Instead, say thank you. And when we become that kind of a person, life will open up in the most magical way for us and it will not be the same again. So that is what it is. So उस level of gratitude का, so इसमें लिखा हुआ है gratitude से आपका career accelerate होने लग जाएगा, success increase होने लग जाएगी, आपका dream job आपकी जिंदगी में आ जाएगा, और जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, be, do and have, that will start happening in your life, बहुत आराम से, because the magical, ये जो जादुई शक्ति होती है gratitude की, ये आपकी जिंदगी को gold में बदल देगी. ठीक है, तो alchemist तो हम हो ही जाएंगे, हम में से हो गए ना already. सो दैट इज वॉट इट इज. सो हम जब ग्रैटिट्यूड को हमको अपना रोजमर्रा का वे, जैसे अभी भी बैठे हुए तो हमें अपने सोफे के लिए, वाईफाई के लिए, मुझे अपने लैपटॉप के लिए, ये जो लैपटॉप आई एम यूजिंग इज गिवन टू मी बाय माय ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए थैंक यू कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल लैपटॉप, इट्स सो स्लीक स्मार्ट लैपटॉप, सो फास्ट, मतलब इतने, मैं तो एडुकेटर हूँ तो इतनी सारी मोटी मोटी किताबें, मतलब थाउजेंड पेजेस की भी बुक्स है मेरे लैपटॉप में, फिर भी इतना फास्ट है. ठीक है, बहुत हैवी फाइल्स हैं, और किताबें तो मैं लिखती हूँ ना, तो मैंने भी जो क्रिएट की है, मतलब बहुत सारी किताबें जो प्रिंट हो गई, बहुत सारी किताबें जो नहीं प्रिंट हुई है, बिकॉज अभी भी whenever I have time I write articles, I write books, something is going on. फिर भी इतना फास्ट लैपटॉप है, तो उसको अप्रिशिएट करना है ना, इस रूम के इतने परफेक्ट एटमॉस्फेयर को अप्रिशिएट करना, आवाज जो निकल रही है, वॉइस कम्युनिकेशन एंड द ब्रेन जो इस वक्त काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना. इस तरीके से ये लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, जिसके कारण हम बहुत बड़े बड़े जिंदगी में दरवाजे हमारे आगे खुलेंगे, और हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा, ओ वाओ व्हाट अ लाइफ, सो दैट इज व्हाट इट इज. सो ये वाला पैराग्राफ ध्यान से सुनेंगे. एज यू मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ, अगर ये वे ऑफ लाइफ बन जाता है कि आपने ब्रश उठाया, टूथपेस्ट उठाया, फिर टूथपेस्ट को थैंक यू बोल रहे हो, फिर अपने दांतों को थैंक यू बोल रहे हो ब्रश करते करते, फिर शीशे में जो इंसान आपको नजर आ रहा है बाथरूम में, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो. ठीक है, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसको थैंक यू बोल रहे हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपने जो नीचे चप्पल या शूज या जो भी पहना हुआ है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, वो प्रोटेक्टिंग योर फीट एंड गिविंग यू कंफर्ट. ठीक है, तो then that gratitude becomes that means अब आपका वे ऑफ लाइफ ग्रेटिट्यूड हो गया है. फिर हर सुबह जब हम उठेंगे,
we will be so excited to be alive. Excitement is a very high vibration word. किसी भी चीज में, I'm excited to do this, I'm really excited to see you, I'm really excited to attend your function, I'm very excited to, like whatever it is that you have to do, I'm very excited to go on a drive, I'm very excited and looking forward to the dinner. So when we start talking like that, that means that you are really joyful. कोई sad complaining person कभी भी ये वाला word use नहीं करेगा, isn't it? So that is how it is. So it says you will find yourself completely in love with life. You will start when you find love in your life, when you start loving yourself, you don't need love from anywhere because you're so content, you're so fulfilled. But by the law of attraction, you will get love of the world. That goes without saying. So falling in love with yourself. If you're excited about starting your day and if you're excited to be alive every morning, you are not seeking love and confirmations and this, how will others feel, what will others say. You least care about them because you're so full of life. And you are so full of life that you would want to start giving it to people. You will want to give that aspect of your life to people and make them happy and make them more cheerful, okay, wherever they are. So इसके बाद जब gratitude इस level तक आ जाता है, life will seem effortless, जो हम हमेशा बोलते हैं life is beautiful, easy and effortless. ये चीज हमने वायर कर ली अपने दिमाग में, at least for people who have been there in these sessions for the last 3-4 months, है ना, by auto suggestion and by repeating that to yourself that life is beautiful, easy and effortless, and then you will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. ओके अपने आप जिंदगी में एक अश्योरेंस आ जाती है, एक पावर आ जाती है कि आपको पता है कि देखो मेरी जिंदगी में ये चीज अच्छी नहीं चल रही है, इसको टर्न अराउंड करने का तरीका ये है, ठीक है, दैट इज। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाइल चैलेंजेस में कम, है ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, बट हमको ये पता होगा कि हमको इनको ओवरकम कैसे करके विक्टोरियस कैसे इमर्ज होना है, क्योंकि हम एंड गोल को भूलेंगे नहीं उस वक्त, एंड गोल को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ग्रैटिट्यूड सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं होता, ग्रैटिट्यूड हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं। हमारी जो ड्रीम लिस्ट है, अभी तो हम अभी पास्ट के लिए ही करेंगे, पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए 12 चैप्टर्स तक, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे ग्रैटिट्यूड अपने फ्यूचर के लिए, that thank you that I could purchase my beautiful new house, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल से, जबकि वो घर हमारा है नहीं, हमारी डिजायर में है कि हम एक नया घर वहां पे खरीदना चाहते हैं या रेनोवेट कराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मन में है, लेकिन हम उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड फ्यूचर के लिए भी होता है, और फ्यूचर के लिए जब ग्रैटिट्यूड कर दिया दैट थैंक यू दैट माई बिजनेस इज गिविंग मी अ टर्न ओवर ऑफ से 5 crores एवरी half yearly or whatever, whichever way you want it to be, तो उस तरह से, एंड पहले से थैंक यू कर करके वो चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है। तो दैट इज हाउ, सो वी विल नो दैट हम आउटकम भी खुद ही डिसाइड करते हैं, है ना, मतलब जैसे मैं कल एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें उसमें वो था दैट एक सेंटेंस था दैट you are the canvas and the paintbrush for your life, तो अभी तक ये था that you have the paintbrush in your life and that canvas is there. So here you are the canvas also and you're the paintbrush also of your life, because you create both of them and then just do the painting that you want. तो अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखो अच्छे तरीके से, एक लाइफ ऑटोबायोग्राफी होती है ना, शॉर्ट में 2 पेज में 3 पेज में जैसे भी आपको लिखनी है, वो जिंदगी की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो। कभी ऐसे फुर्सत से जब आप लोग के पास टाइम होगा तो लिखना, मैंने भी अभी तक लिखी नहीं है। So we'll just write our own autobiography that once upon a time there was a girl named Deepti who was born in the city of Patna, Bihar, and then her parents were this and she had brothers and sisters, and then they had to relocate to Rajasthan because her dad caused the Rajasthan cadre, so they had to go and stay there, and they were living in a small town of Udaipur, and then she was like this, her behavior was like this, and then she went to school and she studied there. Her school in the initial years was not that average because she had that travel bug into her, and she would travel with her father to every tour that he made, missing school. So like, so write your own script like that and write it till the end of your life. जब आप इस धरती को छोड़ के आप ट्रांजिशन लोगे, आप तब तक अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखो। तो आज तक की स्क्रिप्ट है वो तो हम बहुत आराम से लिख लेंगे क्योंकि हमने वो जी है, लेकिन इसके आगे की जो स्क्रिप्ट है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वो इतने इमोशंस के साथ लिखेंगे और वो क्रिएट करके एंड तक लिखो, एंड देन लाइक
when she passed away from this world and when she took a transition, there were so many people celebrating her end of the life also because of the way she lived. So this is how. So write that script, write that insane success जो आपको देखनी है कि वो stage पे खड़ी हुई थी and she could hear the applause from 10,000 people in one auditorium, stadium, wherever. And it was so beautiful. Her name was all over the place. When she was traveling, when she was flying, she could see her books written by her, in the W.H. Smith stands, and it was so beautiful. She was waiting to see that day, and then she saw it. Write a script like that, and then what countries she traveled to. So it's your own story, you're writing about yourself. So write your life autobiography in short. Okay, and emphasize more on gratitude when you're writing that, and you will see that आपकी जिंदगी exactly वैसे turn होगी जैसे आपने लिखी है. हाँ, पढ़ लो. Is your life magical? Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The area of your life that were abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It is a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, better joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when you're not grateful, you are taking. You are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Thank you so much, Rachna. This is all we'll be reading for today from this book. Okay, so Thank we'll you switch so over to the much. next. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you. So here what we see is that Rhonda Byrne ने topic लिखा हुआ है, is your life magical? तो अपने अपने areas देख लो कि आपकी जिंदगी में अभी ये जो main 4 areas हैं हमारे, which is relationships, health, money and career, ये 4 areas होते हैं. ये चारों कहाँ stand कर रहे हैं? अगर इनमें कहीं पे कुछ गड़बड़ है इन चारों एरियाज में, इसका मतलब है कि उस एरिया में बहुत ज्यादा कंप्लेन रही है अभी तक, एंड यू नीड टू गिव फर्स्ट टू रिसीव. ओके, इट्स नॉट लाइक जाके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी मंदिर में जाके या कहीं पे जाके हम मन्नत मांगते हैं, है ना. मतलब मन्नत मांगने इज ओके, यू आर प्रेइंग अबाउट इट, आप अपने डिजायर के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं. बट देन फिर बिजनेस करते हैं भगवान के साथ कि अगर आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी तो मैं 12 लोगों को खाना खिलाऊंगी, मैं वहां पे जाके ये करूंगी, उसके बाद मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं इतने इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगी, या कुछ 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 समथिंग. ठीक है, तो बहुत क्रिएटिविटी होती है वो बिजनेस अरेंजमेंट में, तो वो भगवान के साथ बिजनेस करना होता है. ऐसे तो फिर मन्नत नहीं पूरी होती है. ठीक है, अगर आपको, आप पहले जाओ, ऐसे नहीं कि मतलब वो धागा बांध के आ जाते हैं, फिर वो खोलने जाएंगे, फिर पैसे चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. आप पहले चढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद आप मन्नत मांगो. पहले चढ़ाओ कि बिकॉज थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम, या थैंक यू भगवान, जो भी आपके भगवान हैं, कि मैं चढ़ावा चढ़ा रही हूँ इन रिसीप्ट ऑफ दिस डिजायर.
ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगी. सो इसमें रॉन्डा ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. फर्स्ट यू हैव टू गिव, ओनली देन यू रिसीव. पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, करियर एक्सिलरेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू गिव. सो द बिगेस्ट थिंग यू कैन गिव इज ग्रैटिट्यूड. ठीक है, पैसा बहुत चाहिए, पहले पैसे को ग्रैटिट्यूड दो. पेजेस पे पेजेस भर दो. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास पैसा नहीं आए. ठीक है, अगर हेल्थ आपको अच्छी चाहिए तो उस हेल्थ को इतना भिगा दो, उसको सैचुरेट कर दो ग्रैटिट्यूड के साथ में, दैट वो हेल्थ अच्छी होगी, मिरेकल्स हो जाएंगे. मतलब मैजिक तो फिर भी उससे कम वर्ड होता है. तो इस तरह से जिंदगी बदल जाती है. ठीक है, सफलता अगर आपको चाहिए, अपनी सफलता के लिए जो जो चीजें आपने आज तक हासिल की हैं, आप उनके लिए थैंक यू बोलो. तो आपके पास एक लेवल ऑफ सक्सेस आने लग जाएगी. एंड दिस हैपेंस ऑन इट्स ओन, बिकॉज कहते हैं ना, मैजिक कम्स फ्रॉम इनविजिबल रेल्म. सो इसीलिए रॉन्डा बर्न ने ये वाला चैप्टर लिखा है, ये टॉपिक लिखा है, जिसमें लिखा है दैट आप देखो आपके कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें थ्राइव एंड फ्लरिश आप नहीं कर रहे हो. इसका मतलब है उसमें आपको ज्यादा डीप डाइव करके ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें एनर्जी नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है. ठीक है, तो हो सकता है कि कोई हेल्थ का फैक्टर हो जो पिछले 25 ईयर्स से आप कैरी कर रहे हो. कुड बी अ ब्लड प्रेशर, कुड बी ब्लड शुगर, could be anything for that matter, like हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म हो या कुछ हो. तो अगर वो 25 साल से चल रहा है आपकी जिंदगी में, और आपने 3 महीने ग्रैटिट्यूड किया और आपको लग रहा है अभी तक हुआ क्यों नहीं ठीक, देखो ग्रैटिट्यूड तो वर्क नहीं करा, 25 साल की प्रॉब्लम है. ठीक है, कम से कम उसको 1 साल दो. ऑल्दो वो ठीक होने लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उसकी बहुत पहले से ठीक होने लग जाएगा. लेकिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, ऐसे हुआ क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं. ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अपने टुडे को अप्रिशिएट करो, जो आज अच्छी चीजें हुई है उसको करो. इसी तरीके से आगे का रास्ता खुलेगा. ठीक है, रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो. इट्स ओके फॉर थिंग्स टू टेक 8 मंथ्स. इट इज ओके अगर 1 साल लगता है. 25 साल की प्रॉब्लम है, 1 साल तो दो ना अपने आप को. मतलब उसमें सोचो 25 साल की एक एक दिन की नेगेटिव एनर्जी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये पे है, मुझे वहां पे दर्द होता है, मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, मैं ऐसा फील करती हूँ. हमने 25 ईयर्स तक वो बोला है. तो सोचो कि कितनी ज्यादा उसमें एनर्जी नेगेटिव थी. अब गलती तो हमारी है नहीं, क्योंकि तब तो हमको पता नहीं था कि जिस भी चीज को एनर्जी देते हैं वो एक्सपैंड होती है जिंदगी में. तो सोचो कि हमने अपने बलबूते पे कितना एक्सपैंड कर लिया उस नेगेटिव चीज को, या उस बीमारी को, उसके बारे में सोच के, बोल के, बात करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ द टाइम हैज कम जब हम पूरी उस एनर्जी को जो हमने 25 ईयर्स में अक्रू की है उसको हम न्यूट्रलाइज करके ग्रैटिट्यूड से, उस पहले तो हम न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना, खत्म करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को ग्रैटिट्यूड कर करके उसके बाद बिल्ड करना शुरू करेंगे ग्रैटिट्यूड को. और जैसे ही वो एनर्जी प्लस में जाने लग जाएगी, अपने आप वो 25 साल पुरानी बीमारी जो थी वो ठीक होने लग जाएगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. इसलिए ये प्रैक्टिसेस जो है ये पेशेंस की हैं. थोड़ा सा पेशेंस, ज्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आप चेंज कर सकते हो. लेकिन पता नहीं कितना ज्यादा उसमें कंप्लेन भरी पड़ी है. ठीक है, या पता नहीं क्या कर्मास ऐसे किए होंगे, तो वो कभी कभी दिमाग में, सबकॉन्शियस में घर बना के बैठ जाते हैं. तो उनको हटाना sometimes take times, because now when you're constantly positively affirming things, so वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव कर्मास किए हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज होने में कभी कभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाता है. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की. बीच में छोड़ दिया तो वापस आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां से आप शुरू उठ के खड़े हुए थे. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो कंसिस्टेंसी रखते हैं हम. लोगों के एक एक दिन में मिरेकल्स हुए. मेरा मेरा हुआ है ना, मैंने आपको सुनाया था. मेरा एक्चुअली द रिपोर्ट सेड दैट आई हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है, एंड आई टर्न्ड अराउंड. मंडे आई वाज डायग्नोज्ड, वेडनेसडे डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव एनी बीमारी. सो वो सेम पर्सन, सेम, और वो सारे सिम्टम्स भी थे. तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि रिपोर्ट गलत है. एक्चुअली वो सिम्टम्स थे, उसकी सारी वो था. मतलब सब मैं सफर कर रही थी ना उस दिन, तो मुझे पता है ना मेरी क्या हालत थी. अगर मैं छुट्टी लेके हॉस्पिटल गई हूँ, इसका मतलब वाकई कुछ गड़बड़ है. ठीक है, बिकॉज वर्क आई डोंट लीव, आई डोंट टेक अ छुट्टी अनलेस इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ.
सो इट इज लाइक दैट. बट 2 दिन लगे. अब 2 दिन में जो प्रैक्टिसेस की वो भी मैंने आपको बताई. मैंने तो नहीं कंप्लेन की इधर से उधर से, कुछ 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 ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे कैसे हो गया, मैं तो इतना करती हूँ. दैट वाज जस्ट भगवान का प्रसाद जो मुझे मिला था, ताकि कोई गंदगी मेरी जिंदगी के डेप्थ से हमेशा के लिए निकल जाए, है ना. So I'm so grateful to that situation it has come, which has made me believe the magic of gratitude in my life. So that is what it is. So we all need to make radical changes in our life. जिसमें last paragraph में लिखा हुआ है that to see the magic and cause a radical change to your current circumstances. Radical मतलब बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़ी intensity में अगर आपको shift चाहिए अपनी जिंदगी में इस वक्त जहां पे भी आप हो, ठीक है. So you have to practice gratitude and make it your new way of life. You have to practice gratitude and make it your new way of life. आगे जिंदगी जीने का तरीका has to be gratitude. Okay, so this is how much we'll be reading. और next topic हम कल करेंगे, जिसमें हमको कल से assignments मिलने शुरू हो जाएंगे. ड्रीम लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करने का सोचना शुरू कर दो अभी से, that what is it that you want in your life, the whole list, big list of things that you want in your life. ठीक है. इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. अपने ट्रैवल गोल्स, अपने हेल्थ गोल्स, क्या आपका बॉडी वेट वो है जो आप चाहते हो, नहीं है तो उसको अपने गोल्स में डालना. सोचना शुरू कर दो आज से, बिकॉज फिर कल एकदम से हो सकता है बिजी डे हो जाए और असाइनमेंट्स फिर साथ साथ हो तो ही मजा आता है, वरना आगे पीछे में फिर वी लूज ट्रैक. तो साथ साथ करना ये वाले असाइनमेंट्स भी. तो कल का है हमारा ड्रीम लिस्ट का, वैसे मतलब हमको ड्रीम लिस्ट क्या, गोल लिस्ट, विश लिस्ट, डिजायर लिस्ट, जो भी आप बोलो वो हमको लगाना है, बनाना है. तो उसमें हमको सब कुछ ही लिखना होगा. हेल्थ, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू योर बॉडी वेट, इट कुड बी रिलेटेड, अगर आपको टोनिंग चाहिए, सपोज आपको लग रहा है मेरा पेट थोड़ा निकला हुआ है एंड यू वांट अ फ्लैट toned abdomen, so you can write that, put it in your dream list. Then anything you want, say a particular kind of a complexion for your face, you can write that. If you want to travel to certain countries, you can write that. With whom you want to travel, you can write that. कितना आपको मनी रिसीव करना है हर महीने, आप वो लिख सकते हो. आपको घर खरीदने का दिल है लेकिन अभी आपको लग रहा है अभी तो मैं सक्षम नहीं हूँ एक नया घर खरीदने के लिए, लेकिन लिख दो उसको. आपको पता नहीं है कि कैसे वो जिंदगी में आपका आएगा, ठीक है. सो इस तरह से अभी से, आज से सोचना शुरू कर देना. रैक योर ब्रेन बाय थिंकिंग दैट व्हाट इज इट, ऑल दोज थिंग्स दैट आई वांट टू क्रिएट इन माय लाइफ. Okay, and write them down. I mean, start writing them down. So जो actually कल की practice होगी, but सोचना आज से शुरू कर दो, because tomorrow might just turn out to be a busy day for all of us. So we don't know. Yeah. So now we go to the next book, Telepsychic, and Meetu from Calcutta will be reading for us. Chapter number 4. We're starting a fresh chapter. Good morning. Good morning. How telepsychics enables you to foresee the future and recognize the voice of intuition. Many people in the financial world have the capacity to anticipate the rise and fall of stocks before they occur on the objective plane of life. The reason for this is rather simple. You will always receive intuitive or inner promptings regarding the subject to which you direct your attention. Your subconscious always responds according to the nature of your concentrated thought. ये हम अभी तक 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं. जहां पे भी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड थॉट है, वो चीज जिंदगी में एक्सपैंड होगी. क्या ये थॉट है कि ये नहीं हो रहा, तो नहीं होगा वो. अगर ये थॉट है दैट वाओ, व्हाट इफ आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग माय लाइफ एंड आई हैव सो मच फ्रीडम टू स्पेंड मनी नाउ, आई कैन जस्ट बाय हाउस इन एनी सिटी इन इंडिया, आई गॉट अ विला इन गोवा, वाओ आई हैव सो मच मनी, और मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा पैसे के बारे में. आई एम लविंग दिस फीलिंग ऑफ फ्रीडम जो अब मेरी जिंदगी में है. ठीक है, इस बारे में सोच रहे हो कि इसमें सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, उसने भी मुझसे पैसे उधार लिए, उसने वापस नहीं लौटाए, इसने भी नहीं लौटाए, पता नहीं कैसे होगा, इतना स्ट्रगल चल रहा है, पता नहीं बिजनेस में ऐसा. जो भी आपके कॉन्सेंट्रेटेड थॉट हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज व्हाट इट मीन्स. एंड इंट्यूटिव पावर्स हमारे अंदर से बहुत आते हैं, लेकिन उसके लिए हम साइलेंस प्रैक्टिस करनी. Silence practices just have to meditate for about 15 minutes is more than enough. Try and meditate. इसको consistency के साथ करना पड़ेगा, over and above what all you're doing already, because that's when you receive meditation or quieting. It just could be a walk.
ओके, आई रिसीव अ लॉट ऑफ इंट्यूशंस एंड हंचेस व्हेन आई एम जिमिंग. वो मेरा फ्लो एरिया है. मुझे अपनी किताब का नाम तब पता लगा था. मैं अपनी किताब का नाम सोच रही थी कि मैं किताब का नाम क्या रखूंगी. मैं 1 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैं जिम गई, मैं वर्कआउट, राइट इन मिडल ऑफ द वर्कआउट आई गॉट द नेम ऑफ द बुक. फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. कुछ चीज मैंने इधर उधर रख दी थी, मुझे नहीं मिल रही थी. मुझे जिम में उस टाइम मैंने वर्कआउट करते वक्त मुझे याद आया. सो इस तरह से जब आप क्वाइटिट्यूड में और आप फ्लो में होते हो तो आपके पास आंसर्स रिसीव होते हैं. हाँ जी. A young businessman practiced telepsychics to make a small fortune. Recently, I had a conversation with a pharmacist who told me that a few years earlier, he had made a study of the gold stocks in Africa, Mexico, Canada, and our own country. He focused his attention on about 5 stocks, which at that time were very depressed in price on the stock exchange. His telepsychic communicating with the infinite intelligence of his subconscious mind approach was as follows. Every night before he went off to the deep of sleep, he would quietly say to his deeper self, reveal to me the best investment in these gold stocks, and I will be aware of the answers clearly and distinctly. The answers will come into my conscious reasoning mind. It will be impossible for me to miss the response. He followed the above technique regularly every night, while at the same time studying the financial background and prospects of the individual gold stocks in question. One night, a man appeared to him in a dream with a that showed him a chart with the names of the particular gold stocks, revealing present price and the future heights. He bought the stocks immediately on the awakening. Later on, they reached the prices that he had seen in his sleep. He then sold the stocks and made a small fortune, which he said he would never have made working as a pharmacist. He has since repurchased many of these stocks at a lower price to make considerably more money. The man appearing in his dream was a dramatization of his subconscious mind, revealing to him clearly and distinctly the answer to this question. सो इसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ लोगों के डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं. तो एक फार्मेसी था, उसका मेडिकल स्टोर था. तो उसको ये था कि उसको अपनी इनकम बढ़ानी थी और बहुत पैसे कमाने थे. तो उसने स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया और उसने शेयर्स खरीदे. और अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोने के पहले वो रोज रात को पूछता था दैट टू द इन्फिनिट पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, मुझे रिवील कीजिए कि मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कराइए जो बहुत बढ़ रहा है मार्केट में, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. और जो भी आंसर आएगा मैं उसके लिए क्लियरली अवेयर रहूंगा एंड आई विल बी एबल टू गेट द आंसर क्लियरली इन माई माइंड. ये वो रोज बोल के सोता था. तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली उसको नाम पता लग गए कि उसको कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले. तो इस तरह से कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड को हमारी डेस्टिनेशन पता होती है. और सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हम इस धरती पे कितने साल जिएंगे, क्या क्या बड़े काम करेंगे, क्या उसका बेस्ट ऑप्शन होता है. अगर तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी इनर पावर से पूछो. वी हैव दैट इनसाइड अस रेजर्वॉयर ऑफ वाटर. वहां से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल निकाल के पियो. वो सब हमारे अंदर है. ठीक है, इतना हर सवाल का जवाब अंदर है. तो जब हमें वो रिवील हो जाएगा, जैसे सपोज कोई चीज नहीं आंसर हो रही है प्रेयर, तो हम ये भी पूछ सकते हैं सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से दैट प्लीज रिवील टू मी व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज इन माय लाइफ सो दैट आई कैन achieve another level of success. तो आपको पता लग जाएगा. और reveal to me the things that I need to do to be able to achieve this kind of growth and success. अगर हम ये पूछेंगे और उसके बाद पूरे दिन भर में परेशान नहीं रहेंगे, क्वाइट माइंड में रहेंगे, लाइक रिसेप्टिव मोड में, एट पीस, हमको वो जवाब हमेशा रिवील होंगे. ठीक है, उन क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ, जब आपका इनर गाइडेंस सिस्टम को आप एक्टिवेट करके रखते हो और सारे सवाल का जवाब आप वहां से पूछते हो.
है ना। सपोज अगर आपको कोई किताब लिखनी है तो आप पहले सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि मैं किस चीज पे किताब लिखूं, क्या टॉपिक होना चाहिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपने आप मिलेगा या न्यूज़पेपर टेलीविजन में कहीं पे कुछ ऐसा होगा, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ गेटिंग दो सिग्नल्स एंड क्यूज फ्रॉम आउटसाइड, वो होगा। फिर उसके बाद आप पूछोगे कि अच्छा, can you reveal to me the person who will publish my book, can you reveal to me the person, the best publisher for this book, who will take my book to another level and make it the national bestseller or international bestseller. सो आप अपने आप, हो सकता है कि आपकी फ्रेंड किसी पार्टी में बुलाए और वहां पे जाके आप उस पर्सन से मिले और जो जो कहे कि दैट आई विल पब्लिश योर बुक और वट एवर, लाइक कहाँ से ये होता है आपको, मतलब it's beyond human mind comprehension to be able to assess that. सो नहीं पता लगेगा आपको, लाइक मतलब खुद को पता लग जाएगा, और कैसे वो जिंदगी में आपका वो पब्लिशर आएगा वो आपको पता भी नहीं, मतलब इट विल बी इन द मोस्ट यूनिक वे, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे, दैट पर्सन विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब बुक पब्लिश हो गई। अब आप पूछो दैट यूनिवर्स, कैन यू प्लीज रिवील टू मी हाउ दिस बुक कैन बिकम द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, there you will have. So this is how step by step पे using your own subconscious mind, which is your own, that infinite intelligence तो आपके अंदर है, लेकिन हम उसको टैप नहीं करके हम परेशान होते हैं, हम वरी करते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं जिंदगी में, हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हम रोते हैं, हम लाइक कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। तो it is better to be just quiet and listen to your inner self and ask yourself the question जो इस person ने की है ना, और उसको distinctly उसको आंसर मिल गया, और उसने वो इतने शेयर जो इतने सस्ते खरीदे हुए थे वो सब इतने महंगे उनके बिके, and he became a wealthy person that way. हाँ जी। How telepsychics solved a secretary's problem. Some months ago, I had a consultation with a young woman whose father had died. She was the only child whose mother had passed on when she was quite young. When she was about 8 years old, her father took her to Hawaii, where they visited all the islands. He told her that he had purchased 3 plots of land that same day she would inherit. As he had bought them just for her, Me too, someday she would inherit. yeah, someday she would inherit. As he had bought them just for her, however, she could find no trace of a deed or record of any kind among the papers and did not even know which island he had referred to, since he had never mentioned the matter again. I suggested to her that she relax at night, quiet her mind. It was necessary to imagine she was talking to the infinite spirit within her. I urged her to conduct a dialogue with this presence and explained to her that this process is called telepsychics and that she would get a definite response. The prerequisites were sincerity, recognition, and acceptance of the answer. Accordingly, she conducted an imaginary conversation with a higher self along these lines. My father's deed and the transactions regarding the property are somewhere, and I know that you, my higher self, knows, and I accept the answer now. I give thanks for the answer, and it is so. She then quietly lulled herself to sleep with the one word answer, repeating it over and over again. The last waking concept with which you go to sleep every night is etched into your subconscious. If your idea is sufficiently emotionalized with confidence, your subconscious will determine how the answer will come to you. आप दोबारा से पढ़ लो, if your idea. The last waking concept with which you go to sleep every night is etched into your subconscious. If your idea is sufficiently emotionalized with faith and confidence, your subconscious will determine how the answer will come, as it knows only the answer. She repeated the above mentioned technique every night for about 2 weeks, and at the end of that time, she said her dad appeared to her in her sleepy
In a sleep, he was smiling and said, I am going to unravel your problem. The deed and sales contract are in the family Bible, the one your grandmother used to read. Look at page 150 and you will find it in small envelope. I must go now, but I will see you again. It is your daddy. Don't think it is a dream. She awoke somewhat shaken and rushed downstairs and opened the Bible. There were the papers she was looking for, tax receipts, sales records, and deed. Thus, her dream saved her much time and expense. No one knows exactly what method the subconscious mind will use in answering your prayer. The capacity of clairvoyance is one of its powers. Thus, the secretary could, by means of clairvoyance, see the location of the deed. Her subconscious could weave it into a dream image, showing a father revealing the answers to her, somewhat similar to a writer of a play who formulates the words uttered by his characters. If you say it was exactly the spirit of a father, this belief would be accepted by many, as this young woman believed implicitly that it was her father. We must remember that there is telepathic communication every day amongst loved ones, fathers, mothers, sons, daughters, relatives, friends, of whom are very much alive on their plane. There is no death, and all our loved ones are around in us, separated by frequency only. They each have subjective minds like all of us and have rarefied, attenuated bodies capable of penetrating closed doors and collapsing time and space. To say that your father or mother could not possibly send you a telepathic message from the next dimension would be like saying your father could not send you a telepathic message from Boston or that he could not phone you or wire you a message. We are all in the one mind, common to all individual persons. Every person is an inlet and an outlet to that one universal mind. Mind and spirit, which is the reality of all of us, can't die. For God is life, spirit, and that is our life now. God is spirit, and the living spirit, Almighty, indwells you, walks and talks in you. Thousands of years ago, the ancient Hindu mystics said, you, spirit, were never born. You, spirit, will never die. Water wets you not, fire burns you not, swords pierce you not, and wind blows you not away. Yeah. Okay. Thank you, Meetu. This is all we'll be reading today. In fact, topic hi khatam ho gaya. So now we have FAQs that we'll do tomorrow. Thank you so much for reading so beautifully. So yeah, let's start studying about what Dr. Joseph Murphy has written. दो तीन चीजें उन्होंने एक ही टॉपिक में बता दी है. पहले की एक लड़की थी, सेक्रेटरी का काम करती थी एक ऑफिस में. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे उसके पास नहीं थे. ठीक है, तो उसको एक्चुअली इसके मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो गई थी. मदर उसकी 8 साल की थी तभी वो उनकी डेथ हो गई थी. जब ये बच्ची 8 साल की थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी. तब उसके पापा उसको हवाई के आइलैंड्स लेके गए थे और वहां पे उन्होंने 3 प्लॉट्स खरीदे थे बड़े बड़े. और बेटी को उस वक्त ये कहा था 8 साल की उम्र में कि इस हवाई आइलैंड पे ये 3 प्लॉट्स हैं, ये सब मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी. एंड ऑल द 3 प्लॉट्स वर गिवन और वो डीड साइन हो गई थी, पूरा लीगल अग्रीमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था. और उसको पता था कि वो इनहेरिट कर रही है ये 3 बड़े बड़े लैंड पीस ऑफ लैंड को on the Hawaiian island. And then after that, of course, they shifted to the city and she started working. और उसने पढ़ाई की और उसके मम्मी पापा दोनों ही मतलब दोनों ही चले गए.
फिर उसको एक दिन याद आया कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि देर आर 3 प्लॉट्स दैट ही वांट्स टू गिव टू मी ऑन हवाईन आइलैंड। अब उसको ये भी याद नहीं था कि वो आइलैंड कौन सा था, क्योंकि जब वो गई थी वहां उनके साथ अपने डैड के साथ तो वो सिर्फ 8 साल की थी। तो उसको ये पता था कि हवाई में आइलैंड्स है, बट कहाँ पे हैं, कौन से हैं, उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए था। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रखा हुआ है। तो फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिली, क्योंकि मैंने बताया था ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसमें बहुत रेडियो प्रोग्राम्स करते थे सुबह शाम सुबह शाम। और जा जाके मतलब वो पेड सेमिनार्स लेते थे ऑडिटोरियम में। सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिली, वहां पे उसने अपने इशू के बारे में डिस्कस किया। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको कहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है, आप आंसर अपने आप से पूछो कि कहाँ पर वो डीड है जो आपके डैड ने आपके नाम से 3 प्लॉट्स किए हुए हैं या जो भी है। तो देन एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग शी वुड आस्क herself, she would ask that to the infinite intelligence, God, please reveal to me where the deed is. Okay, and I will definitely receive the answer, and it is so wonderful, and thank you for it already in advance. और फिर लास्ट वर्ड उसका होता था सोने के पहले, तो ये सोने के पहले ये पूरा बोलती थी, फिर सोने के पहले लास्ट वर्ड होता था आंसर आंसर आंसर, बस यही बोलती थी आफ्टर सेइंग द होल सेंटेंस। उसके बाद एंड देन उसने ये नहीं किया कि ठीक है 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए मैंने 4 दिन से पूछ रही हूँ मुझे जवाब ही नहीं आ रहा, ये नहीं था। उसने ये वाली प्रैक्टिस लगातार 2 हफ्ते के लिए करी। शी कॉन्स्टेंटली डिड इट फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद उसके डैड उसकी ड्रीम में अपीयर हुए और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी ग्रानी जो बाइबल पढ़ती थी, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने बताया कि आपकी ग्रैंडमदर जो बाइबल पढ़ती थी उसके पेज नंबर 150 में वो डीड है। तो उस जब वो सुबह उठी तो उसको लगा कि ये मेरे डैड कैसे ड्रीम में अपीयर हुए, बट एनी हाउ वो इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो किया। वो फटाफट नीचे गई, उसने वो बाइबल निकाली जो फैमिली बाइबल थी, और उसमें खूब सारे पेपर्स और कुछ कुछ रखा हुआ था। उसके एक्चुअली पेज 150 पे ये वाली डीड थी लैंड की, एंड फाइनली शी कुड गेट इट। उसके बाद अब सबकॉन्शियस से पूछा, 2 हफ्ते लगे आंसर रिवील होने में। ठीक है, उस बीच इसको कितना कॉन्शियसनेस में रहना पड़ा होगा, क्योंकि आंसर कभी भी आ जाता है तो आप नजरअंदाज भी कर सकते हो उसको। अगर वो आंसर आता है और आप अपने ख्वाबों में ख्याली पुलाव में खोए हुए हो, परेशानी में, तो आंसर नहीं आता। आंसर हमेशा तब आता है जब आप बहुत पीसफुल माइंड में होते हो। ठीक है, या आप मेडिटेशन में होते हो, या आप मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हो, या इवनिंग वॉक कर रहे होते हो, वेर यूर टोटली विथ योर सेल्फ। उस वक्त आंसर्स एंड हंचेस एंड ट्यूशंस आते हैं हमेशा, है ना। तो स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो वो सब क्या, उसके आंसर मिल गया। फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने समझाया कि एक बार कोई भी ये सोच सकता है कि फादर तो डेड हो चुके हैं, वो कैसे मेरे ड्रीम्स में आ गए। सो इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मर्फी ने समझाया है कि देखो, टेली कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, टेली साइकिक, ये लगातार हमारी जिंदगी में चल रहा होता है, और लगातार हम लोग कम्युनिकेट करने के केपेबल होते हैं। जो भी हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो होते हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, स्पिरिट मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो हमसे अभी भी कनेक्टेड है ना। जो हमने एक्चुअली पावर बुक के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो भी हमारे लव्ड वन से जो गुजर भी गए, है ना। जैसे मेरे पापा नहीं है, लेकिन अगर मुझे उनसे कुछ बात करनी है, या मुझे उनको कहना है कि पापा थैंक यू, आपने वो ट्रैवल का बग जो मेरे अंदर डाला था जब मैं 2 साल की थी, तब से मुझे वो पूरी फैमिली में मुझे लेके हर टूर्स पे जाते थे। तो मुझे इतना ज्यादा ट्रैवल का बग है, एंड आई एम सो एडजस्टिंग टू वेयर आई डोंट केयर अबाउट वेयर आई एम स्टेइंग, व्हाट होटल, आई डोंट ऑलवेज हैव टू स्टे इन अ 7 स्टार, बिकॉज I've become that a smart traveler. I can eat whatever is available. I always Google look for things. So अगर मुझे उनसे बात करनी है पापा से, तो वो सुनेंगे और मुझे जवाब भी देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन टेलीकम्युनिकेशन। जो साइकिक कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं ना, जिसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। टेलीपैथी तो हम शायद बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं। सो चाहे हमारे फैमिली वाले, फ्रेंड्स दुनिया में हो या ना हो, हम उनसे फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। और जिस तरह डॉक्टर मर्फी ने इसमें समझाया है कि वो दरवाजे खिड़की के परे आ जाते हैं, हमारे 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 रूम में आके हमारे सामने बैठ के बात कर सकते हैं वो हमसे। ठीक है, बिकॉज स्पिरिट को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दे कैन कम टॉक टू अस, दे कैन गिव अस आइडियाज, दे कैन सपोर्ट अस। हम उनसे पूछ सकते हैं सवाल, वो हमको जवाब दे सकते हैं। तो इसी को क्लेयरवॉयंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्लेयरवॉयंस वाली एबिलिटी हम सब में है, लेकिन हम लोग बहुत कंज्यूम्ड रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में, जिसके कारण हम वो आंसर्स रिसीव नहीं कर पाते, है ना। ये वाली बुक थोड़ी हाई लेवल की किताब है, तो कोई सोचेगा हम पागल ही बात कर रहे तो ऐसे। सो इट इज, यू कैन कम्युनिकेट।
कभी क्वेश्चन करके देखो। जैसे अगर मुझे डैड से अपने क्वेश्चन करना है, अब हो सकता है कि उन्होंने जन्म ले लिया हो इस धरती पे दोबारा से, ऑब्वियसली ले ही लिया होगा, इतने साल हो गए, है ना, और इस जन्म में भी वो बहुत बड़े होंगे उम्र में। तो ये जो उन्होंने अभी जन्म लिया होगा, क्योंकि बहुत पहले की बात है, मतलब अर्ली 90s में, व्हेन ही हैड पास्ड अवे, तो उन्होंने जन्म भी ले लिया, सब है। लेकिन अगर मुझे उनसे कुछ पूछना है, उनसे कुछ बात करनी है, ही विल बी अवेलेबल टू मी। ठीक है, मैं रात को सोने के पहले कोई भी क्वेश्चन पूछूं, मुझे उस चीज का जवाब मिल जाएगा। दैट मीन्स माई डैड स्पिरिट हैज आंसर फॉर मी ना, ऑब्वियसली। सो दिस इज हाउ। सो इसमें इंडियन माइथोलॉजी, मतलब इंडियन वो लिखा हुआ है, लाइक यू नो स्क्रिप्चर्स में, कि सोल हमेशा अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है ना। दैट इज दैट स्पिरिट वाइज वी नेवर डाई। हाँ, द बॉडी कैन चेंज एंड अनदर बॉडी वी माइट टेक, बट द स्पिरिट इज नेवर गोइंग टू डाई एवर, है ना। तभी तो इब्राहिम हिग्स जो है, इब्राहिम हिग्स तो इंसान नहीं है ना, वो जेरी मतलब एस्टर हिग्स की बॉडी में, उनके सबकॉन्शियस में आके उनसे बात करते हैं। एस्टर हिग्स जिंदा है, एस्टर हिग्स की बॉडी में हायर कॉन्शियसनेस या जो भी स्पिरिट है, जो भी महान स्पिरिट है जिनको दुनिया बदलने का पहला वो था, वो एस्टर हिग्स की बॉडी को यूज करके उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। आप कभी भी वीडियो में एस्टर हिग्स का कभी वीडियो सुनना, तो वो हमेशा उनकी आवाज और सब कुछ ही अलग, थोड़ा डिफरेंट होता है लहजा बात करने का, जब वो खुद होती है और जब वो स्पिरिट को अपने अंदर बुलाती है और फिर वो उनके थ्रू बात करती है, जिनको उन्होंने नाम इब्राहिम हिग्स दिया हुआ है। और इब्राहिम हिग्स नाम भी उन्होंने उनसे ही पूछा था कि आपको नाम क्या दूं। जो किताबें जो लिखते हैं वो इब्राहिम हिग्स लिखते हैं उनके हाथों के थ्रू, वो उनकी भाषा नहीं होती है, एस्टर हिग्स की भाषा। ठीक है, तो इस तरह हम देर इज अनदर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी भी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। देर आर अमेजिंग, जिनको हम एंजल्स, स्पिरिट्स, ये सब नाम देते हैं ना, एंजल नंबर, एंजल्स एंड स्पिरिट्स। सो दैट इज समथिंग कम्युनिकेटिंग विद अस ऑल द टाइम। वी आर सराउंडेड बाय अमेजिंग एंजल्स, तभी तो मिरेकल्स होते हैं हमारी जिंदगी में, because that those angels are there to guide us to, but then हमको mindful तो रहना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर हम परेशान होंगे, परेशानी के जोन में या बिलो द लाइन वाले जोन में, कभी भी हमारे पास कोई इंट्यूटिव पावर नहीं होती है, वी आर पावरलेस। ठीक है, इसीलिए अपने आप को जॉय, हैप्पीनेस, पीस, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड एंड लव में रखना जरूरी होता है, चाहे हमको आर्टिफिशियली मेहनत करनी पड़े अपने आप को उस लेवल में रखने की। तो यही वो समझा रहे हैं, दैट there is always that force inside us to guide us। हम उसको यूज तो करें ना। तो जो भी अगर कुछ सवाल करना हो, कुछ परेशानी चल करनी हो, वो आप रात में पूछ के सो जाओ उसको। और कोई चीज इम्प्रिंट करनी हो, जैसे अगर आपको सपोज पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, सो माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड बाय डे एंड नाइट, और जितने सारे एफर्मेशंस जो बताए हुए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कोई सा भी उसमें से क्या हम सिंपल लाइन कर लेते हैं, आई एम कैश रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर आप ये भी बार बार अपने आप को बोलते रहोगे, स्पेशली जब मनी का फियर आए या मनी का वरी आए, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड इसमें ट्यून होने लग जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो पेनिट्रेट होता है वो आपकी जिंदगी बन जाता है। सो दिस इज हाउ टू लिव लाइफ। दैट मीन्स हमारी लाइफ में कितना ज्यादा मीनिंग आता है इस वजह से, है ना। वी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद आवरसेल्व्स, बिकॉज this is the power we have studied, we have used, and we are constantly। और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ, कुछ बहुत पर्सनल होते हैं तो मैं इस लेवल पे प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती, बट मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ सबकॉन्शियस माइंड से, about little things in life, about big things in life, about the next step I need to take, to whether I should do it or not, how I should do it, all this I ask the subconscious mind कि किस तरह करूं, क्या वो तरीका है जिससे मैं आई कैन रीच दैट लेवल ऑफ विक्ट्री विथ समथिंग। सपोज कोई किताब लिख रही हूँ, कोर्स की किताबें, सो अभी तक तो मैंने कोर्स की ही किताबें लिखी है सारी, पहली बार आई एम वेंचरिंग इनटू राइटिंग अ फिक्शन बुक, सो या आई मीन लाइक that way। So this is how to go ahead in life, and it is actually a very beautiful, meaningful life, and just be excited about how this mystery gets revealed to us, because life is a mystery and we are deciding that mystery। So it is partially, but किस तरह से वो हमारे पास आती है और उसके आने से, because जो चीज हमने मांगी है ना वो +1 मिलेगी आपको। I mean, you ask for 10 lakhs, you will get 15. You ask for 15, you'll get 25. That's the beauty when you actually tap into that reservoir of subconscious mind, जिसके पास सारे आंसर्स हैं, जिसके पास सिर्फ सक्सेस है, सिर्फ लाइफ वर्ड चीजें हैं, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, वेल्थ,
मल्टीपल घर इन डिफरेंट कंट्रीज, और ये सब अपने आप से होने लग जाता है। ठीक है, सो या दैट्स हाउ मच। थोड़ा सा टाइम हाय ओवरशूट कर दीप्ति। गया आज, लेकिन हाय। अच्छा सुनीता। So I want to share my experience. So yesterday I was just thinking in the morning कि आज Valentine Day है, कैसे celebrate करूँ, बहुत मजा आए. So yesterday what happened? Yesterday मतलब दीप्ति पहले मुझे वॉक पे मिल गई. She called me कि कहाँ है, तो हमने 1 घंटा वॉक करी. Then we talk about all the things. फिर दोपहर में भी मिल गई. We enjoyed coffee. Yeah. Then in the night also we enjoyed. So my Valentine Day was amazing yesterday. We enjoyed so much yesterday. I mean, it just so Yes. happened I met her thrice yesterday in the Thrice morning, and yesterday. then I realized evening, in the morning today. sunset we did together. Yeah. Yes. We've done pretty So many I sunsets realized together. कि मैंने आज सुबह रियलाइज किया यार कल मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब याद नहीं कि हम मतलब दिन में 3 बार मिले. हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, आई थिंक कभी नहीं हुआ. यस आफ्टर कोविड वाला जो बंद था उसके बाद. यस. हाँ, कोविड में भी 3 बार नहीं मिले होंगे. या मॉर्निंग वो इवनिंग भी मिलते थे. एक्चुअली. हाँ हाँ, So कोविड में भी yes. 3 बार नहीं मिले होंगे. And she said कि नहीं तू telepsychic कर. I said okay, I'll come and join your telepsychic book. No, but you've been following the videos, no, on the YouTube. Yes. Telepsychic मैंने नहीं, वाले. आज तो मैं लाइव में आई थी telepsychic में, सुन रही थी. हाँ, मैं आज जब तू फिनिश कर लेगी तो मैं फिर बोलूंगी. ऑब्वियसली आज लाइव ही है ना, तेरा स्पिरिट तो नहीं आया हुआ. लाइव नहीं, आज तो लाइव सुन रही थी. मैं ये बोल रही हूँ आज मैं लाइव सुन रही थी तेरा. ये We तो मैं were बोल all रही हूँ, talking ऑब्वियसली about आज तो spirits लाइव and है, all, and तेरा then स्पिरिट थोड़ी आया है, मेरे को टेलीकम्युनिकेशन थोड़ी हुई. मैम लाइव मैम ब्लू ब्लू जो नजर आ रहा है ना, it's giving a sound of the हाँ spirit only. है ना, हम लोग spirits की बात हाँ, कर ऐसे रहे थे, एक्चुअली अचानक तुम से थोड़ी मैम आई, सी. you appeared like that, and then And one thing all I want to share, like we were talking मतलब हम लोग एक दिन वॉक कर रहे थे. वॉक तो हम ऑलमोस्ट करते ही हैं. सो एक दिन ऐसे ही वॉक कर रहे थे. शी वाज टेलिंग मी कि दीपक ने ये दिया, मेरे को ये दिया, ऐसे दीपक देते हैं पैसे. सो आई केम एट होम, मतलब रात में ऐसे ही बैठी हुई थी. देन आई थॉट कि हाँ मतलब ऐसे होता नहीं है. तो कहते हैं ना कि जो चीज आप दिल से करते हो वो हो जाती है पूरी, मतलब आप जिसमें रेजिस्ट नहीं करते हो कि होगी कि नहीं होगी कि नहीं. सो आई वाज टेलिंग दीप्ति. तो मैं ना ऐसे ही घर पे बैठी थी. मैं सोच रही थी अरे मैं बैठी हूँ, माय हस्बैंड इज गिविंग 50,000, बोल रहे हैं चल सोनू तू रख ले, जो तुझे करना है कर लेना. So, जैसे दीप्ति मुझे बताती है ना, तो हम लोग जैसे बात करते हैं जब वॉक, तो मैंने कहा हाँ यार ऐसे भी तो मैं भी इमेजिन कर लेती हूँ, इमेजिन करने में क्या जाता है. तो आई इमेजिन जस्ट वन टाइम. तो उसके बाद अभी मतलब इस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए, ओनली 4-5 डेज ही हुए थे, और मैं भूल भी गई थी उस बात को, जस्ट एक बार इमेजिन करके. और मेरे हस्बैंड आए ऑफिस में, इट वाज सैटरडे. तो मैं एक पैकेट दिया, मतलब जैसे मैंने भी सोचा था कि एक पैकेट दे रहे हैं, बोल रहे कि ये लो. एंड ही सेड कि ये लो 50,000, दिस इज माय कंसल्टेशन फी. मेरे को मिले, मुझे तो पता नहीं क्योंकि हमारी सेम कंपनी है. तो मैं सोचती थी वो, मतलब मैंने ये रजिस्ट नहीं किया कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे 50,000, क्योंकि हमारे साइन भी जॉइंट होते हैं, सब कुछ वो होता है. तो वो जब भी निकालेंगे तो मुझे पता रहेगा कि पैसे निकल रहे हैं. सो एक दिन वो सैटरडे आए, ही सेड कि ये कंपनी में मैंने कंसल्टेशन दिया था एंड आई गॉट 50,000, मतलब 50,000 पहले दिया जैसे मैंने इमेजिन किया था. तो ही गेव मी 50,000 कि ये लो 50,000 और इससे तुम्हें जो भी करना है कर लेना, इट्स फॉर यू. तो मैं उस टाइम मेरे को याद आया कि अरे मैं तो ऐसे घर आके ऐसे सोच रही थी हाँ यार प्रधान ऐसे बोलेगा तो कैसे लगेगा. तो जब आप रेजिस्ट नहीं करते हो कोई भी चीज तो वो बहुत जल्दी हो जाती है. जब हम ये सोचते हैं ना हो नहीं रही, तो उसमें फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो काम करने लग जाता है. मतलब इट्स माय एक्सपीरियंस. और यस मतलब बहुत सारे मेरे चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइक मनी, रिलेशनशिप, ऊपर से फिर हेल्थ में भी आ गया. तो लेकिन आई ऑलवेज, दीप्ति को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, भगवान ने कहा और स्ट्रांग हो जा तू. तो मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. लाइक मेरे राइट हैंड में ब्रेकडाउन आया, बट मैंने एक दिन भी, कल ही मैं रात में बता रही थी इसको
कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, मतलब, और आई एम ऑलवेज हैप्पी, मतलब ऐसा कभी नहीं लगता मुझे कि हाँ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सो क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जैसे दीप्ति मुझे मिलती रहती है, कभी ये अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंस बताती रहती दीप्ति है, कुछ आजकल पर्सनल। वॉक इसीलिए कर रही हूँ, तो मैंने अपना जिम का टाइम कम कर दिया है बिकॉज सुनीता अभी जिम नहीं कर पा रही है, सो आई अकम्पनी हर, सो आई हैव हाँ, तो इंक्रीज मेरे को माय ये स्पेंडिंग हमेशा टाइम इनकरेज विद करती रहती है। तो हमेशा एक ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है जो आपको बहुत इनकरेज करे, बहुत इंस्पायर करे। सो दीप्ति ऑलवेज इंस्पायर मी। थैंक सो यू सो थैंक यू मच सो मच दीप्ति, थैंक So यू, nice to see you, Sunita, after a long, थैंक यू, long थैंक time. यू सो मच। But you're looking very blue, like a bhoot. कृष्ण पता भगवान है ना नहीं ये। अभी जूम में ऑप्शन हो गया, पता नहीं, ठीक ही नहीं हो एक्चुअली रहा, क्या blue है दिखती कि हूँ। सब लोगों के, इतने सारे लोगों ने टेलीसाई की किताब पढ़ी जिसमें हम आज स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि स्पिरिट्स आते हैं, तो वो तुम सच्ची हम में आ सबकी गई है। मैनिफेस्टेशन हो आज आज। तो वही लग रही है, हंसता हुआ भूत। हाँ, तो सब देखो, सब लोग ये एक्चुअली तुम हमको मैजिक क्यों देने आई हो कि जो आप सोचते हो और पढ़ते हो और जो वही, दिमाग में सोचते हो वो हकीकत में बदल जाता है, तो ये यस हम यस सबके लिए यस, मैजिक। थैंक यू सो मच। Thank चलो बाय बाय। Thank you for thank you, coming, thank you so Sunita. much. थैंक यू, And थैंक wish यू, Sunita you is a थैंक very always यू। quick remembered as a recovery. wow person. हाँ, she's a यस wow person. यस, वाओ। Yeah. सुनीता बाय मैम, बाय बाय अब बाय। कलर्स ठीक हो गए आपके सुनीता मैम। ओ ठीक हो गया सच में, एकदम ये भी normal. मैजिक है, ये भी मैजिक। मैजिक हो गया ये But सच में, बहुत दिन I से have जूम में आ still, रहा था। सुनीता को मैंने एक गोल्डन ऑफर दिया है कि तुम्हारा शैम्पू, हेड वॉश और बहुत अच्छा सा ब्लो ड्राई मैं अपने हाथों से कर सकती हूँ, तो उस बात को याद रखना। हाँ, इसने मुझे ऑफर दिया है कि तू आजा, मैं तेरा करूंगी। बोला अच्छा ठीक है। So sweet. क्योंकि हमारा घर बिल्कुल पास पास है ना, हम इसलिए। बिल्कुल साथ में रहते हैं, बहुत मतलब मेरा 17 क्लोजेस्ट इसका 18, नेबर्स तो हैं, बस क्लोजेस्ट नेबर्स हमारा, मतलब बेस्ट हमारे फ्रेंड। घर का नंबर भी इतना सिमिलर है, लाइक जो हम माइन इज यूट्यूब पे नहीं 17, इसका बताएंगे, 18। जो हम यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। ओके आप ओके ओके ओके, चलो घर बाय से बाय। ज्यादा दिल पास है, घर से ज्यादा दिल पास पास हैं। यस 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 दिल तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तब भी मेरा आपके बहुत पास है। यस, दिल तो So हमेशा पास में sweet. होता आज ही तो पड़ा है ना, टाइम एंड स्पेस नहीं है। होती यस जब दिल की नजदीकियां होती हैं तो। यस, so डॉक्टर thank जोसेफ you so मर्फी ने much, लिखा thank you है। so much, Thank Deepti. you, Sunita, and get well soon, recover fast so that we can party so much. Till Yes then, yes remember, head wash, shampoo, conditioning, and blow dry is my yes offer yes, to I'll you. avail your मेरे offer. बाथरूम में करेंगे हम। Ma'am, Hina, ठीक Hina, है, ठीक है thank you ठीक Hina's है, so hand is much, raised. thank you. बाय 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 बाय। Hina's hand Yes, is there was raised, a ma'am. hand raised and I didn't. Yes, ma'am, Hina Hina. Patel. हाँ, you want to speak? Ma'am, I have a Yes, question. Hina, you. Yeah, yeah. Yeah. So, ma'am, you said about that we need to start thinking about our next wish list and everything. So, shall we include about whatever has not happened in the last one, or we should just leave that one and go ahead with the new? Because a lot of definitely new things everyone will be expecting or Yeah, wanting. obviously, there are so many new things that we would love to have because, like हमारा growth and expansion लगातार होता रहता है when it comes to our desires also. There are new things that have propped up. Suppose, like you feel that now you really need to do something about your health or say about body weight. Till then, it was not really so important to you. So now this is a new desire that has come up. So please write that down. Then it could be that, your car in the last 1 month has multiple breakdowns and you feel that it's time that I purchase a new car. So then that will now come in because, एक डेढ़ महीने में एक दिन में things, situation change so much, the desires change so much. So yeah, I mean, like, of course, we should have the same. Some things can be repetitive, of course, that you really want, and some things can be new. Maybe earlier it was only 12 desires. This time it could be 20. That way, है ना? Thank you, ma'am. Ma'am, need your blessings. It's my anniversary today. Oh, wish you a very happy wedding anniversary, and may you thrive and Thank flourish you. together and make each other's lives better Thank you so much, every day. ma'am.
Thank you so Happy much. anniversary. Thank you. Happy anniversary. Anna have disappeared. Yeah. Ma'am, I wanted to ask a question. हाँ It's बोलो. a belief since ages in the world that God has made someone special for us. Always, as in the movies, we have always saw. So, what? So, does manifestation makes any difference in this? I mean, of course, like when you really think before going to bed that to the higher power of the subconscious mind, can you bring that person in front of my eyes who's made for me, your significant other, you know, jo bhi wo hai. And at the right time, that person will come. Yeah, please Okay. reveal to me where this person is so that we can meet up. So that person will come to you. And but keep yourself in that high frequency all the time. That's also very important. Okay. Thank you, ma'am. सारे रेवलेशंस तभी होते हैं जब दिमाग शांत होता है और खुशी में होता है, तभी सारे जवाब रिवील होते हैं. Ma'am, That way. my question is to you, but that was a specific person, or we attract to someone, a new person? There is that one person who's made for you, ठीक है, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा जो भी है, और आपने जो पैरामीटर सेट किए कि लविंग, केयरिंग, रिच, इतना हाइट, इतना वेट, वहां पे रहने वाला, मेरी कास्ट का, तो वो सारी चीजों के हिसाब से वो पर्सन आपकी जिंदगी में आ जाएगा. Okay, ma'am. Thank तो you so जरूर much for आएगा. answering. Yeah, and Yes. bless you with a beautiful partnership with that Thank one you. person. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye then. See you all tomorrow. हाँ जी. 1 minute. हाँ. Just now you said na ki I talk to my father sometimes. Yesterday मेरी mother-in-law का second death anniversary था, and I talked to her. मैंने उनको सारा अपना चीज बताया, and I was so happy that I'm relating to her. अच्छा. Yes. And आप भी बिहार के हैं, मैं भी हजारीबाग बिहार की. That also made me so happy. हाँ. पहले बिहार था, now it has Jharkhand. अच्छा, हाँ, वो south of Bihar has become हाँ, Jharkhand. ये अलग अलग हो गया. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank Love you. Thank you. Love you too. Bye bye. Thank you so much. Have a beautiful day. Thank you so much, ma'am. Thank Bye. you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Bye. Have a Okay. beautiful